77 million Americans voted for President Trump, and black smoke hung over Tel Aviv, a stark visual testament to the breach of Israel's much-vaunted defenses. Iranian Shahed 136 drones cost an estimated $20,000 to $35,000 each. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया सुंदस और मेरे साथ साथ मेरे को होस्ट राठौर भी मौजूद हैं। पिछले चंद दिनों में इसराइल ने ईरान पर प्रिमिटिव स्ट्राइक्स की, कैचिंग तेहरान ऑफ गार्ड। जब बहरहाल ईरान ने भी तेजी के साथ एक चीते की तरह कमबैक किया। महज 18 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स, बामशूर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तल अवीव पर धावा बोल दिया। Meanwhile, Israel's Iron Dome crumbled like a house of cards, and Israeli intelligence was caught napping. Overnight Saturday into Sunday, Israeli emergency services reported at least 10 people, including children, killed in Israel due to Iranian missile barrages, with around 200 wounded. Explosions were heard in Jerusalem, and black smoke hung over Tel Aviv, a stark visual testament to the breach of Israel's much-vaunted defenses. Now, Netanyahu is imploring Washington to swoop in with American military might to save Israel from a defeat he himself orchestrated with Washington's tacit approval. So, जी राठौर, हमने ये भी देखा कि इसके साथ साथ ही रशिया, चाइना, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में भी ईरान की सपोर्ट जो है वो देखने में आई है। यहाँ तक कि कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को इक्विपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पास इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि अमेरिका ने इन हमलों में इसराइल की मदद की। वो सबको सब जान ही रहे हैं और यूएस को इन हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। Let's start with war economy. Washington has squandered $12 trillion in the Middle East since 2003. The result? 7,000 dead Americans, 50,000 wounded, open borders, and all of this while 100,000 Americans are dying annually from fentanyl poisoning. Today, the United States is $37 trillion in debt, a figure that doesn't even include so-called agency debt. 77 million Americans voted for President Trump because he promised to end overseas conflicts and halt the march to WW3. राठौर, it's time for a reality check. यूएस की आम आवाम में जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिकन इस वक्त इमोशनली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से ही किसी भी वॉर के लिए तैयार नहीं है। True, and President Trump's recent statements only amplify this sentiment. Taking to Truth Social in the immediate aftermath of the Iranian retaliation, he declared that the U.S. had nothing to do with the initial Israeli strikes, but issued a grave warning to Iran. If we are attacked in any way, shape, or form by Iran, the full strength and might of the U.S. armed forces will come down on you at levels never seen before. Yet he also added a crucial caveat. However, we can easily get a deal done between Iran and Israel and end this bloody conflict. This dual message, tough talk against Iran if America is targeted, coupled with a push for a deal, resonates deeply with his base's desire to avoid new wars while protecting American interests. बल्कि ट्रंप ने मजीद ये भी कहा है कि उनकी रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने फोन पर बात की हुई है और दोनों रहनुमा इसराइल ईरान वॉर का जल्द से जल्द खात्मा करना चाहते हैं। Trump's mandate remains unchanged. Secure America's borders, ports, and coastal waters. Deport illegal aliens, crush the criminals murdering Americans, and restore the rule of law, but not one more drop of American blood for foreign wars. चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमको अमेरिका की इंटरनेशनल सिचुएशन को भी नहीं भूलना चाहिए। कैलिफोर्निया में जो हालात इतने खराब हैं कि ट्रंप को नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करना पड़ गया है। Now imagine if you couple it with financial catastrophe. Just one Israeli strike on Karg Island, where over 90% of Iran's oil exports flow, or Bandar Abbas terminals, and Iran ends up closing the Strait of Hormuz,
disrupting roughly 20% of the global oil supply. Just imagine the scale of havoc it will bring to Wall Street. आपकी बात भी सही है। मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कर्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल और की स्ट्रैटेजिक एसेट है। Furthermore, Al Monitor reports that Israeli strikes on Sunday hit 2 fuel depots in Tehran, signaling a potential widening of targets to Iran's energy infrastructure. That would mean disrupted supply chains and runaway inflation, with gas prices hitting $7 a gallon overnight. Every working family would be crushed. और ये सब कुछ किस लिए? ताकि इसराइल, जिसने ये पागलपन स्टार्ट किया हुआ है कि वो अमेरिका को इस जंग में खींच सके। आई मीन सीरियसली, इस वक्त अमेरिका के 40 से 50,000 ट्रूप्स यूएई, कतर और पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। और ईरान का रिस्पॉन्स देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ईरान के मिसाइल्स के लिए सिटिंग डक्स बन गए हैं। Cost-benefit analysis also fuels this anti-war sentiment in America. Iranian Shahed 136 drones cost an estimated $20,000 to $35,000 each, while American Patriot missiles cost around $3.8 million per interceptor. Do the math. America will run through its inventory of missiles and go broke, while Americans come home in boxes. वैसे राठौर, लेट्स डिस्कस के वॉशिंगटन को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। Well, the Middle East is on the brink, and in my opinion, the first and foremost thing should be to request an emergency UN Security Council meeting and demand an immediate ceasefire, making it clear that Washington opposes the destruction of Iran, Israel, or any other state in the Middle East. This call for de-escalation aligns with the sentiment from many progressive Democrats, as Al Jazeera noted that some have criticized the Israeli strikes outright, stressing that war with Iran would not serve U.S. interests. What do you suggest? राठौर, लेट्स डिस्कस वॉशिंगटन को क्या करना चाहिए सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इसराइल को गाजा में पैलेस्टाइन्स का कत्ले आम करने से रोकना होगा, और अमेरिका ये भी कर सकता है कि अर्जेंट बेसिस पर एक यूएन पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद रेजोल्यूशन जो है वो अप्रूव करवाए। For that to happen, US needs to immediately suspend all military aid to Israel until it agrees to remove its troops from Gaza and permit humanitarian assistance to reach the people of Gaza. अमेरिका ये भी कह सकता है कि अर्जेंट बेसिस पर एक यूएन पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद रेजोल्यूशन अप्रूव करवाए. Then propose that the United States, Russia, China, India, and Brazil convene a peace conference to arbitrate the dispute between Israel, Iran, and Israel's neighbors, and move towards a two-state solution. जी बिल्कुल, और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की फोन कॉल जिसमें उन्होंने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया, वो एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें नजर आती है इस तमाम सिचुएशन में। Washington's warmongers have had 22 years. They failed. They lied. They profited while America bled. Trump can bring an end to this cycle of insanity. ऑलराइट, वेल, थैंक यू सो वेरी मच राठौर, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी डिटेल में आगाही देने के लिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। उम्मीद ये भी है कि अल्लाह करे कि ये जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए। हमारी वीडियो को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। नीचे कॉमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज सोनिया सुंदस साइनिंग ऑफ।